एबे तो बालीजात्रा बहु जगार होउची किंतु बालीजात्रा कहिले एही बालीजात्रा को ही बुझाए। ओडिशा रे बालीजात्रा कहिले या को बुझाए, देश रे विदेश रे बालीजात्रा कहिले एही बालीजात्रा को ही बुझाए। आज एही बालीजात्रा रे किछि नुआ नुआ हमको लागुची ना नहीं। नुआ नवनिर्वाचित लोकप्रिय मुख्यमंत्री आम मंच रे अछंती। आम मंच रे उपमुख्यमंत्री अछंती। आम मंच रे मुख्य शासन सचिव अछंती। आमर ए मंच रे डेवलपमेंट कमिश्नर अछंती। जिलापाल को धन्यवाद देवी, आपण व्यक्तिगत भाव में समस्त को जाई भेटी आमंत्रण करिसंती एवं आपणकर आमंत्रण को समस्ते रक्षा करिसंती। मु तो यही किछि वर्ष भितरे अनेक जिलापाल को देखिछि, केते जन मुख्यमंत्री को मध्य देखिछि, किंतु प्रथम थर पई माननीय मुख्यमंत्री मु कहबाकू चाहे आपण को उपस्थिति एवं मुख्य शासन सचिव उपस्थिति एका सांगरे गोटे मंच रे पूर्व केबे हेई नथा। तार सुजोग जो कथाटी आमर मेयर कहिले सुभाष बाबू, तार सुजोग आमे नबा। जहाँ आमर बारवाटी कटक विधायिका कहिले यार सुजोग आज संध्यारे आमे नबा पई किछि आशा रखिछु। मु मो भाषण दीर्घ करिबि नै, समय टिके विलंबित हेई गलानी। किंतु आज गोटे कथा मु लक्ष्य कली जे आमे महानदीर जल राशि रे ए घाट पर्यंत आसिला बेले जो सूर्यास्त देखिबा कथा आज देखि पारिलु नाही। न देखि पारिबार गोटे बड़ कारण हला बादल छाई जाइथला पश्चिम दिगंत रे। मु सेही कथा मुख्य शासन सचिव को कहूतली जो ओडिशा रे जदि सबुठारु चमत्कृत सूर्यास्त देखिबा पई कोनोसी टूरिस्ट चाहे से कटक आसीबा दरकार। नराज घाट रे जो सूर्यास्त आपण देखिबे ता भारत वर्षर अन्यत्र बा ओडिशार अन्यत्र कोठी देखिबा पाही। एही कथा मु मुख्य शासन सचिव को कहला बेले गोटे निवेदन मध्य करथिले एवं मुख्यमंत्री को उपस्थिति रे मंचर सुजोग नै कि आज कहूची ओडिशा रे विगत 75 वर्ष भितरे जो टूरिज्म पर्यटन शिल्प आमर बढ़ी सी पुरी कोणार्क भुवनेश्वर अति बेसी हेले चिलिका ताठारु अनु जो डेस्टिनेशन टूरिज्म होउची किए जंगल को जीवा पई चाहूची कि आउ कोठी ताहले से सब जगह मान को से जाउचंते। किछि वर्ष तले जने शासन सचिव थिले, मुख्य शासन सचिव, से कहले कटक केबे तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हेई नहीं। मोर निवेदन रहिबो मुख्यमंत्री को पाखरे, आमर उपमुख्यमंत्री श्रीमती पड़ीराण को पाखरे जे पर्यटन दायित्व रे मध्य अछंती, मुख्य शासन सचिव को कहिछि निवेदन करिछि आपण मान को मध्य करूछि कटक को टूरिस्ट डेस्टिनेशन भाव रे मैप रे रखंतु। ताहले जो टूरिस्ट आसुचंती, जो एजेंसी सब लोक आणुचंती, से माने कटक एवं कटकर आखपाखे थिबा टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुडी को मध्य जानिबे। आज जेभली भाव रे आपण बोटिंग करके आसिले, वाटर स्पोर्ट एठी अछि, गोटे बोट क्लब एठी अछि, एठी मेरीटाइम म्यूजियम अछि, एठी नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम अछि, एठी मधुबाबूंकर म्यूजियम अछि, एठी बिजुबाबूंकर म्यूजियम अछि, एठी स्वराज आश्रम अछि। ता सहित सुदृश्य वर्तमान गड़गड़िया मंदिर मध्य आज सुंदर भाव में निर्माण होइछि एवं सेही पाखरे कारण एभली इतिहास यही
महानदीर बंध तले तले अच्छी जहाँ इतिहास पृष्ठा को उल्टेला बेलू से चरित्र गुड़िक आम सामने आसब से दृष्टि भावुची मुख्यमंत्री गोटे किसी बड़ घोषणा करने को जाऊँच मु लोभ संवरण कर पारना आशा करी जो वाटर बॉडी आमर महानदी साइड रे अच्छी एवं जो वाटर बॉडी काठजोड़ी साइड रे हवा को जाऊँची आपको आम आहरी अधिक अधिक मात्रा रे डेवलप कले पर्यटक माने आसिबे। आई एम रियली इंडेटेड to all the high commissioners and the ambassadors who have come here, and I personally feel very indebted to Mr. Mazumdar, whom I came to know long back, and suddenly he recognized me on this stage. Sir, we have worked together in the United Nations when you had gone to attend the General Assembly. We have spent some days there, and now you are in charge of, as the Secretary of Foreign Affairs, you are in charge of the East. प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट बताया है, और ये जो आज हो रहा है यहाँ 14 राष्ट्र के राष्ट्रदूत कटक के इस मिट्टी में आके बैठे हैं, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है इन दैट लाइन। सिर्फ it's not only trade and commerce that we should enhance. Our soft diplomacy also plays a greater role, and another greater role is the new concept that has developed, on which most of the ASEAN countries, including India, are working together, is about Indian Ocean, Pacific Ocean. Combinedly, we have to work. So in that respect, New Zealand also plays a greater role. Australia also is playing a greater role. It is through peace and trade and commerce that we are binding ourselves together, because we believe that it is through progress that human civilization can prosper. Legacy is there. For many years we have been oppressed, we have been exploited, but now with a rule-based world order, it is high time that we should come together and work together for the betterment of our people. बांग्लादेश के राष्ट्रदूत आए हैं, भूटान के राष्ट्रदूत आए हैं। आज भी मैं बताना चाहता हूं, in Bhubaneswar, also in Cuttack, there are places like Khulna Padia, like Maimansingh. All these names reverberate also today in Odisha, because we had filial relationship with Bangladesh. And of course, Bhutan, I did not expound more on the relationship that we have with Bhutan because of Buddhist culture and civilization. I remember further in Delhi, perhaps I will be having the chance to interact with the ambassador of Thailand. Some decade ago, when I had been to Bangkok, I saw the Ramayana paintings in the palace. I also witnessed the famous drama, if I can call it, because it is not only a drama, it is a festival-like thing. As we are observing Bali Yatra here in Cuttack, seafaring, the same drama with a huge ship that comes on the stage and that is demonstrated. They also observe a similar festival in Thailand. And all of us will be happy to know
I think tomorrow or day after, our Chief Minister is going to Singapore. As Secretary East very rightly mentioned, that it's not that we only have relationship. We had relationship some 2,500 years ago, which continued till 15th century, till the Portuguese and Spaniards came into the sea, into our sea. Till that date, we had a flourishing maritime activity. Now is the time to bring all these countries to Odisha. Our attempt here today is to bring all of you to Odisha to find out, because Odisha is termed in our country as the most unexplored part of this nation. You explore it, you invest in it, and as recently Honorable Minister Education of the Union Government Dharmendra Pradhan had been to Singapore, and he's trying his best to have a specific program connecting Singapore with Odisha. The idea is to have it at Paradip, or to have it at Astarang, or to have it at some other place. I don't know. I'm just, it's just loud thinking. But there are number of things in the line where Odisha will be in the driving seat of progress of Purvodaya that Narendra Modi has envisaged. Our relationship, Madam Ambassador, Sri Lanka, I can only say this. There were matrimonial alliance between Sri Lanka and our place. Brides were going from this place to Sri Lanka, and brides were coming from that place to our place. And even today, by looking up to the sky, our people can say it is going to be a rainy week, rainy day tomorrow or day after, or we'll have full of sunshine. And all this, our people have inculcated from a specific book that they had procured some 1500 years ago or more from Sri Lanka. And you also at Kandy, in the monastery, you have a portrait of a princess who carried the truth of Lord Buddha in the hair. That portrait is still there, and it is your national symbol. And that princess was from this part of the country of India, that is Odisha. So we have number of relations, and we have to explore again, and have to remember again, and have to sharpen it again, and also develop our trade and commerce along with the soft relationship that has become the way of the day today. World is changing, and we are also changing. We should establish that affinity that we are one. There was a time a narrative was created that borders are drawn on the land only, but we have a wider border. That line is greater. The ocean is the border, the sea is the border, the bay is the border. In that respect, we are together. We are nearer. And as you must have seen today, a giraffe being presented to a king of Odisha. That shows our relationship, Kalinga's relationship of 13th century was, because that portrait, that stone engraving, you will be going to Konark tomorrow, hopefully, and you will see that, which was shown here, that king is being presented by one of the trader, a giraffe. And giraffe are only found in the eastern part of African continent. I did not say more. I'm really indebted to all of you for coming here. ଏତିକି କେବଳ କହିବି, ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏଥର ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନେକଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି,
का मनरे टिके टिके खटका भी होथाई पारे किंतु ये नवीनता ये नूतनता आमको आउरी नुआ सोपान को नहीं जीवो ए आशा एवं विश्वास रखी एतिके कहिबी जे जो कथाटी एठी बारंबार हमरो 3 जन विधायक एवं मेयर कहले मेयर तो कही नाती 2 जन विधायक कहले आको आंतर्जातिक स्तर रे नहीं पहुंचेबा दरकार आई मे रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट मुख्यमंत्री अछंती उपमुख्यमंत्री अछंती मुख्य शासन सचिव अछंती ता छड़ा भारत सरकार सचिव पूर्वांचल पई अछंती ए कार्य आमे करि परिबा आज तार आरंभ हला आज 14 जन राष्ट्रदूत एठी उपस्थित हेले एवं 14 जन राष्ट्रदूत आसीचंती कहा आमंत्रण रे आमर लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींकर आमंत्रण रे से माने आसीचंती एवं तांकरी आमंत्रण रक्षा करी ए 14 जन आसीचंती आगामी दिन रे आमे सेही भली आउ किछि किछि लोकन को मध्य डाकिबा एवं जो कथाटी कहा जाउची आंतर्जातिक मान्यता दवा पई आमे एभली किछि उद्यम करिबा जा फल रे यूनेस्को आमको से मान्यता दबो आमको यूनाइटेड नेशन ए मान्यता दबो नहीं आमको ए मान्यता यूनेस्को दबो एवं से यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हिसाब रे दबो सेति भाई आपण लक्ष्य करथिबे जे ये बालीयात्रा केते तम बालीयात्रा लेखा हुए नहीं जमती पारादीप रे कि भुवनेश्वर की अन्य जगह रे लेखा होछि ये ऐतिहासिक बालीयात्रा कारण इट इज बियॉन्ड नंबर्स आ अधिक कहू नहीं आज जो मंच रे आमे बसिचंती ये मंच होछि वैष्णव पाणी को मंच जो वैष्णव पाणी साधारण जनतांकर भाषा को नहीं नाटक रचना करथिले एवं बहुत लोकप्रिय हेइथिले आज तांकर मंच रे आज आमे ओडिया संस्कृति साहित्य विभव वैभव प्राचुर्य एवं ता सहित वाणिज्य कथा कहउचंती एवं मोर आशा एवं विश्वास प्रभु जगन्नाथ कृपारू माँ कटकचंडी आशीर्वाद रे ए कार्यक्रम आगु को आहुरी भल भाव रे हबो एति कहि विदाय नउची वंदे उत्कल जननी।